And breaking news that is just coming in, we are learning that Agniveers will be getting a reservation in the Uttar Pradesh Police and the PAC. In fact, the UP government has just announced that this reservation will be applicable for Agniveers, those recruited into the army through the Agnipath scheme, in the police and the PAC. The Chief Minister, in fact, has announced that the state will be providing reservations to Agniveers in both the UP Police and the PAC. Let's listen in. युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण। So that is the UP Chief Minister making that big announcement. Adib is back with us and he's been tracking all developments from Uttar Pradesh. You know, Adib, I do recall that even the allies like the Janata Dal United, the LJP have spoken about certain concerns in this scheme. And there was a lot of buzz whether the government could be willing to, tinker the scheme, relook at this. But that hasn't happened. What has happened is that different states have started to say that, particular quotas in our state polices, the PAC, etc., like in Uttar Pradesh, will be reserved for Agniveers. Is this good enough? Does this satisfy or blunt the criticism by the opposition? Well, Deepthi, not just allies, but it was the opposition parties that were raising the issue of Agniveers. They were saying that the 4-year tenure of that is being given to Agniveers is a very short period of time. In fact, they spend around 1.5 years in just the training, and they are getting around 2.5 time on the actual duty. After which the central government and the state government has announced that the Agniveers will be getting reservation in different kind of paramilitary forces, whether it be central paramilitary forces or the state forces. And now Chief Minister Yogi Adityanath announced himself today that the Agniveers, when they will complete their tenure, these are the skilled and trained youths, and when they will complete their tenure in the army, in the armed forces, they will get a reservation in Uttar Pradesh Police, in the PAC battalion of the Uttar Pradesh. So this is what Chief Minister Yogi Adityanath has just confirmed, that the Agniveers, after completing their tenure, they will be getting reservation in Uttar Pradesh. All right, Adib, that's a big story that you've gotten for us. For the moment, thank you, and we have